Hello, viewers. This is Aijaz Qureshi from Toronto, Canada, with today's episode of the Aijaz Qureshi Show. Today, in our show, we're going to talk about the fears and facing failures. What are fears, and how do we face these failures and fears? How do we fight these? So, for this topic, we have invited our esteemed guest, Symah Nazir. She's a passionpreneur, and she's a great personality. She is originally from Lahore, Pakistan, and herself, she's an educationist and a trainer and a thinker, and she does so many things. And the good thing is that she's a dreamer. And when I see dreamer dreams or anything, I go back into my past when we used to run the Daydreamer show, and it was all about dreams. Not that I have given up on dreams, I'm still dreaming. But again, when I see a fellow dreamer, I get excited. And she's a very soft-hearted person. She she has eclectic range of interest and diverse experience in education and corporate sectors. She has been involved in the field of education, counseling, management, and training, and all that. And she is also a founder and CEO of LSC-Learning Support Center, is the abbreviation for LSC. And it's an initiative to provide academic and professional and spiritual support to the learners, to the society. Let's welcome on our show. Let's welcome our esteemed guest, Symah. Welcome to the show. Thank you so much, Ijaz. I'm really humbled and honored and very glad to be on the show, all the same. Thank you so much. Thank you. Welcome again. So we will dive into the topic later, but let's hear about Symah, because people connect with people. So let's hear out how Symah looked like when she was like 10 years old. When I was 10 years old, Yes. I think I haven't changed much. I was the kind of person who would like to have a lot of friends and cousins around and who would always have a plan to make them follow. And I was never short of ideas. So I would always knew, even when it was playtime, I would know what we are going to play and I would just direct them. And I was fortunate and lucky that they would always follow, and it had always went smooth. And not just that, I think I had a natural uh, you know uh, a liking towards coaching others. So ever since I remember, I've been teaching my younger sibling, my cousins, people around me. So I would always feel the pain if anybody would be trying or struggling with something, especially academics at that age. So I would be there You'd go and out and help. yeah. Awesome. Awesome. Great. Let's take some comments in here. Waleed Ahmed Khan is our regular viewer, saying salam. Interesting topic. Walaikum assalam. Thank you so much for hopping on the show. And so let's talk about your passion. Like I haven't heard that term before. I have heard entrepreneurs and otherpreneurs. I haven't heard a passionpreneur. Yeah. Who came up with this term? Did you yourself, or you took it from somewhere, or what? No. So that's entirely my own idea, and I tell you how I finally understood why I would be called as a passionpreneur, because Yeah, yeah, as I exactly. I've had a lot of experience working in the management, studying mathematics, doing arts, studying language, uh, different types of work, dramatics, managing teams, leading teams, envisioning. I would just dream of a plan, then I'd work to make it come into, just to make it come real, alive in front of me. And that's what I did. And I've been doing that. And I was curious in whatever was given to me. I would just take up that task. I would not say no, not knowing that how in the end all these dots would connect and make me a passionpreneur. So I would put in all my energy and do it wholeheartedly. Not that I was not aware of the fact that there has to be a calculated and a thought out plan for this, but I wouldn't get tired of my work. And I learned that the biggest kick that I would get and the energy that I would get would be when I'm among people. So I was really passionate, and I still am. I'm like passionately curious about new things, and especially helping people grow, and also myself. So with every passing year or day or month,
I want my canvas to be bigger and bigger, and Alhamdulillah, Allah's helped me so far. So yeah, Very and that nice. helps me to not to feel tired at all. So I'm like passionate about whatever I do. I thoroughly enjoy that. Good, Alhamdulillah. good, good. So, who do you take inspiration from? Okay, to be very honest, there are a lot of people. I do not mind getting inspired by, how people in Lahore by the roadside would just open an umbrella in the morning and put their handkerchiefs and the pair of socks there and then just wait for the customers to come. So I even take inspiration from such people because of the belief that they have that they've done their job and now the rest is, up to Allah that He's going to send them the right clients. And not just that, but also people around me, my mentors, my seniors, sometimes students. But most importantly, I think it's not just because I'm just saying it for the sake of saying it, but my faith, my religion has really, really, inspired me in so many different ways. So I take Good. a lot of inspiration from that. That's very good. That's very good. And so I know you had the passion to help others, and whoever was lacking behind in education, you would go out and help. But did that play a big role in you becoming an educationist and trainer? I think somehow, yes. Education, I always knew that is one field that I'm always going to work in or work for. I can say that because there was a time in my career for 4 years that when I worked for a multinational, but then I never took it as a career. I knew for me that was a break. So I went back to education after I had my son, and I knew I was going to do that. So yes, helping others has always helped me as well in realizing that what can I provide to others and what do people look up to me for. So I believe, Ijasa, very honestly, that growth is like any individual's, birthright. So even if you plant a tree, you have a seed, you sow a seed somewhere, you can't just leave it there. It's very natural that it'll grow, provided it has the right climate and whatever, requirement it needs. So similarly, even if it's a helper in my office, who's very efficient and active and young, I would even give her this task like for 2 months, you've got the summer break, you're an active girl, you're a young girl, but use this time and come up, start reading. I'm there to help you. You've got a lot of people around you. So no matter, there's no competition. Everybody, whatever place, whatever position, whatever status they are at, I think they cannot just stay there. They have to move on, they have to improve, Absolutely. otherwise you'll drop. Absolutely. uh, Completely agreed. it's a very stagnant state where it's just no point. True. And yeah, so that's why I think Awesome. yes. Awesome. That's good. I have few comments. Let's take one at a time. Walid Ahmad Khan is saying, fear means false evidence appearing real. Mhm. That- that's cool. Saying Uh, that. yeah, this one element in human nature have destroyed countless lives. Absolutely, it did. Yeah. Though it is also uh, defensive Defensive. mechanism, which help, but too much of it will hamper progress. Exactly. It's exactly. Absolutely. You've क्या got कहेंगे to. आप? What you gonna say about it? I agree to this, and this is exactly I just add to it. So when I say the word fear, so with the positive approach that I always put into every situation that I am in, I think even fear can be used positively for to some extent, but not to an extent where you just shut down all your senses and you're blinded and you're so depressed and you see there's no way out. So fear, as I told my 10-year-old son, public speaking is a very, very um, I think it's one of the toughest job that a lot of people find it as. So this is what I tell him: every time you have to speak in public, you feel some kind of a rush within yourself, which you Yes, think anxiety or fear. So don't say it anxiety or fear. Call it excitement. So the excitement. moment you feel that it's an excitement, so that power will become your strength now, and use it because now you're getting, a boost, and you're using it and you're looking, you become a little more energetic and you can do your work well. So to this extent, it is all good. But otherwise, if you think
देखिए जैसा if I tell you fear में करना क्या होता है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि it is a false evidence, so it's not always real. ये real है कि there can be a natural disaster or something, you have to die, you can be afraid of that, but thinking what are other people thinking about me, what if I'm going to fail, people don't consider me as a good a useful or a beneficial person around. So these are all kind of fears that are not there. So what you need to do is to just sit back, relax and analyze. So once you analyze, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से कितना self खुद से आपने बनाया हुआ है false और कितना इसमें से actually exist करता है. So आपको reality. लगेगा कि बिल्कुल. mostly like 10% से ज्यादा उसमें कोई reality होगी नहीं. And वो 10% भी ऐसा है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं. So you can take measurable steps, reasonable, steps that can be taken thoughtfully और जिसको आप overcome कर सकते हैं. So yeah, जैसे उन्होंने कहा है कि false evidence appearing real. So yeah, some people do think that fear is something that you can just forget about and you just run away. But I would say that fear would mean to face everything and rise. So you have to overcome the fear and stand tall in front of it, strong with the belief that yes, you can do it. And it no Awesome. longer is. Awesome. That's great. Thank you so much. We have Farooq Shahid with us saying Assalamu alaikum wa alaikum assalam. He's also part of Team Rehan. Nadeem Raza Sandhu is with us saying Assalamu alaikum to everyone. Wa alaikum assalam. Thank you so much. And Walid Ahmad Khan is further adding saying one of the most common fear is in our society is log kya kahenge. Bilkul, exactly. This is true. The single though have killed destroyed countless talents and lives. बिल्कुल हम fear में इसी fear में कि लोग क्या कहेंगे, we can't really do anything. We Exactly. just yeah. I just add to this, Sidrasa, because हम people pleaser बन चुके हैं, and that's our fault. So I see a lot of people जिनको शादी पे अगर इतनी dishes नहीं होंगी तो लोग क्या कहेंगे, बेटी की शादी में अगर इतना कुछ साथ नहीं भेजूंगी तो लोग क्या कहेंगे, I am living in a toxic relationship. If I want to break free from that, तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे को provide किया. So all these things, why do we have to, हमारी अपनी weakness है. So the day you understand and realize that there's only one, एक ज़ात है जिसको आपने please करना है, and that's about it. So nothing appears real in front of you. All those ये लोग क्या कहेंगे जो लोग हैं, ये सब आपके सामने बिल्कुल मामूली और इसकी कोई हकीकत रहती नहीं है फिर. So you just have to shift the paradigm from becoming people pleaser. You have to become the pleaser of Allah's pleaser. So you have to just please Him. बिल्कुल, that's true. फिर कह रहे हैं कि वलीद अहमद खान साहब weakness breeds fear too. हाँ, weakness से fear होता है. Exactly whatever kind of weakness it is, personal, health wise, emotional, financial, professional, whatever it is, right? Exactly. तो अगर आप मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया है अपना entrepreneurial venture by the name of Learning Support Center, मैंने बहुत सोचा कि मैं लोगों को क्या बताना चाहती हूँ through this. So the three things that I really want people to know and understand is to envision. ये जो आपकी weakness है, आपको तब समझ में आती है कि मैं envision कर रहा हूँ कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है. और वो जब आप वो envision करेंगे, the second thing is enlighten. तो जब आपको पता चल गया है मैं वो बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे अपने आप को enlighten करना है, that's where my role comes in. And you can find a lot of other people who can help you. Even books can support you. आप सोचिए आपको कहाँ जाना है, वहां तक जाने के लिए आपको क्या skill set चाहिए, आपको क्या किस तरीके से अपने आप को up to date करना है. And then once you have the two things, that is how you become empowered. And that's why I completely believe in it, to envision and then enlighten yourself and feel empowered. And that's how you can overcome any sort of fear that you might have. Good. So can we dive into a little bit more into fears? I have named a few, and can we dig into these? I know this principle that you just mentioned, it applies to pretty much all of these fears. But again, is fear sort of a temporary thing, or it stays with us forever, or is it a temporary phenomena? What is it? Okay, so
it is actually a temporary phase, but it can live for a long time with you, because hota kya hai, आपने जो भी achieve करना है, that lies on just the other side of the fear. तो हम लोग हमेशा से एक एक बहुत reasonable या mediocre सी job करते रहते हैं, हालांकि आप वही काम कर रहे होते हैं जो अगर आप अपना entrepreneurship में लेकर आए उन्हीं skills को, तो maybe you can earn a lot more in terms of money, in terms of name, in terms of satisfaction. मगर आप नहीं करेंगे because वो एक risk लेना पड़ेगा. तो ये एक बहुत बड़ा fear है. You don't want to take risk, and then आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है एक ही जॉब पे बैठे हुए कि what if I take another step, तो मैं गिर नहीं जाऊं, मैं लड़खड़ा नहीं जाऊं. हालांकि अगर आप ये स्टेप ले लेंगे तो फिर ये बिल्कुल fear जो है, it will become temporary, because once you've crossed that barrier, you're into a new world altogether, which is full of so many more opportunities and growth. So yes, ये एक temporary phase भी है, but having said that, आपने वो step लेना है, मगर बिल्कुल बगैर सोचे समझे मत लें. Make sure that the step that you're taking is properly thought out. There's a plan to it, and then again you might fail, and you must fail. But then इससे घबराना नहीं है, because आप fail हो भी जाएंगे तो you fail once, you fail twice, but as long as you're learning from your mistakes, you're getting one step closer to the success and the goal that you want to achieve. Right. So, so you mean to say that we have to fight our fears, right? Yes. Sometimes all by ourselves, sometimes we need to have people around us who can help. And especially आप जो काम करना चाहते हैं, आप उन्हीं तरह के लोगों के experiences से सीख सकते हैं. तो वो आपको काफी अच्छा एक रोड मैप दे सकता है to follow. At least आप वही गलतियां दोबारा नहीं करेंगे जो already लोग कर चुके हैं. I'm not saying बिल्कुल नहीं करेंगे, but there'll be new mistakes and they might add into the experience and learning of the people to follow. ठीक है. एक चीज होती है fear factor. ठीक है. So how do we deal with that? कि एक चीज मैं कर ही नहीं, मुझे सांप से डर लगता है तो मुझे डर लगता है, that's all. डरता हूं मैं, that's my fear factor. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. I'll give you a very real example. मैं सारी उम्र being the single daughter of two brothers and very pampered, and I think ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमेशा cockroaches से डरते थे. और मैं रात में अगर लेटी हुई हूँ तो मुझे अचानक से बेडशीट के ऊपर जो मरून या ब्राउन बॉक्स है, वो देखते देखते वो अपीयर हो जाता है कि कॉकरोच है. I don't know, nuts. Yeah. But the day I became a mom and I was in the washroom with my only toddler and there appeared a cockroach, I had no choice but to kill that cockroach myself. Because if not, then who? And if not now, then when? So these exactly. कभी-कभी कोई चीजें आप अपने लिए नहीं कर रहे होते, because you see people around who are pampering you, supporting you. True. When you step into the real world, you just have to do it. बिल्कुल ठीक कहा आपने. Waleed Ahmed Khan is adding more comments saying people pleasers are usually those who themselves have low self-esteem and weak morale. People pleaser, जो लोगों को खुश करते हैं, खुशामदी जिनको कहना चाहिए. बिल्कुल. काफी सारी चीजें सिर्फ इसलिए कर लें कि लोगों के लिए अच्छे बन जाएं. Exactly. Why would you want somebody else to आपको वो खुद से क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे अपनी वर्थ खुद पता होनी चाहिए. हाँ, बिल्कुल. Tell you your worth. Exactly. Or sadly in our society people are more concerned about have and have nots rather than uplifting and encouraging each other. बिल्कुल मेरे पास ये है तो बड़ी अच्छी बात है, दूसरे के पास नहीं है तो मैं खुश हूँगा कि चलो दूसरे के पास नहीं है, और जिसके पास नहीं होगा वो जिसके पास होगा उसको देख करके जल रहा होगा कि यार उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है. Exactly. मेरे पास मेहरान है, उसके पास होंडा सिविक है या उसके पास मर्सिडीज है. Exactly. कभी-कभी मसला सिर्फ यही हो जाता है कि उसके पास क्यों है. उसके पास क्यों है. Exactly. ये सबसे बड़ा मसला है कि वो भी मेरी उम्र का आदमी है या औरत है और वो भी वही काम करती जो मैं करती हूँ, लेकिन उसके पास जो है मर्सिडीज है और मेरे पास मेहरान है. Exactly. तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब वलीद भाई. थैंक यू सो मच. वलीद भाई हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं. सच अ वंडरफुल गाय.
Then he's saying, you may not agree with me, but many people in job industries are working in same industry for years because they have fear of instability and taking risk. No, no, Exactly. I definitely agree to this, and this is Yeah, exactly what you mentioned before. So you're true, absolutely right. true. That's right. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपके comment का. Thank you so much. Did I miss any comment here? Yeah, thank you so much. So going back to the topic again, so we have talked about fears, and there could be different kinds of fears. There's a financial fear, there is personal health fear, there is job fear, there is some skill you don't know, and uh, you're thrown into that, and then that becomes a fear as well. But you have to fight it, as Symah said. Uh, Yeah, there is fear, and then there is anxiety. So we talked yeah. about anxiety in my like past shows, and is there a very thin line in between a fear and an anxiety? I would define anxiety as fear of the unknown. Okay, Yeah. So fear of the and that unknown. might never happen ever. But just because you're so deeply thinking about something negative or wrong to happen, कि Right. बस आप की वजह से anxiety को develop कर लेते हैं. And just so that I can give a little tip on this to people who are listening to me maybe, and that I have used personally, अगर आप ये सोचते भी हैं ना कि कहीं ये ना हो जाए, तो that is in a way strengthening that thought. That means you're bringing that thought, you're helping that thought to become real. So you need not think about it. So every time you have a negative thought in your mind, you switch your thoughts, and as you replace it with something positive. तो बिल्कुल उसका opposite सोचना शुरू करें. अगर आपको ये डर लग रहा है ये ना हो, ये कहीं ये हो ना जाए, तो you start thinking about the other side. अल्लाह करे ऐसा हो जाए, and start Like, believing in it कि yeah. आज तो ये होने वाला है. So sometimes I do that. I Huh. wake up really tired in the morning, but I would just dress up, get ready for work as if, there's something special going to happen today and I'm all prepared for that. क्या बात And है. that's the kind of approach that you need to have. हाँ, आज तो कॉकरोच निकलने ही वाला है, so you are mentally ready for that. ओके जी. कुछ और कमेंट लेते हैं जनाब. राव दिलशाद इदरीस साहब is another viewer of ours, saying assalamu alaikum sir Aijaz Qureshi. Walaikum assalam, thank you so much, and everyone welcome in the show. Madam Symah, nice topic. क्या बात. Thank you, so nice of you. Paid advertisement. Saloni Sanjeev Arora is a great singer, professional singer. I had a blast with her on the show. It was great. She's a phenomenal, versatile singer. And saying, hi, ma'am, very thankful to you for teaching such useful ways to overcome fears. I need to know about fears of doing conscious mistakes, as if I am not sure about the results of or having fear and discomfort to perform the task. Then should I just leave that or take risk over it? Risks are good, but I believe, but conscious is not allowing me to do so. Then what? फिर क्या करें जनाब? बस एक कॉन्शियस में एक चीज आ गई कि जी वो नहीं, इसमें गड़बड़ हो सकती है. कोई शक डाल दिया कॉन्शियस ने, आपके जहन में एक शक जो है वो पैदा हो गया. Okay. So I would do the other way. If I अच्छा. know कि ये मैं करूंगी और मेरा प्लान बिल्कुल फूल प्रूफ है और मुझे पता है कि मैंने बहुत thoughtfully ये किया है and I have reasons to take those steps, पहले से proven कोई मेरे पास ऐसे case studies हैं probably, I would take that. And once I believe कि मुझे ये करना है, तो I would believe in myself as well. मैंने जब सोच लिया है कि मुझे ये करना है, तो ये ऐसा ही होगा जैसे मैंने सोचा है. I would take that risk. But risk again, having said that, ensure कर लें आप उससे पहले कि जो भी आपका plan है, take help from a mentor, take help from a friend, take help from anybody. There are a lot of ways. आप books से ले सकते हैं. आपने कोई भी चीज, कोई भी step जिंदगी में लेना है, तो I'm sure we are not the first ones to do it. There have been people who've done and who've been through that. So Exactly. learn from those experiences. बिल्कुल But बिल्कुल. आप कोई आपके दिल में शक डाल दे या कभी कभी आपके खुद भी आ जाए, तो I think that's not a very wise thing to follow. I always tell people when I say आप अपने आप को दूर कर लें हर किस्म की नेगेटिविटी से, कि लोगों से, और they
people that are around you. In the same manner, you have to block yourself from the negativity that's inside you, and that's बिल्कुल. fear. जो आपको कहता रहता है कि अगर ये ना हुआ तो फिर तुम तो हाँ फेल होगी, ये तो बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है. So you have हाँ एग्जैक्टली. to stay away from the negativity coming from inside you as well. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और taking risk in a calculated way, I think it's very wise. Yes, calculate the risk. What is the probability of the risk to really risk of failing whatever you're trying to do? Thank you so much, Saloni ji. You got the answer from Symah. Thank you so much, Symah, for describing that. Walid Ahmed Khan is saying, take calculator. Acha, thank you so much. I just said that. Thank you so much. I didn't see the comment. Salim Khwaja is, Ustad Salim Khwaja is a very good professional singer. I had to happen to listen to him recently in a concert, and it was amazing, amazing, amazing. He's saying, Salam Aijaz Qureshi Sahab, Alaikum Assalam, Janab. Salim Sahab, thank you so much. I really enjoyed your shows, and it's very informative, and you really raised very important topics. I love you. Thank you so much for your love. Someday, and I do shows on topics, as you have seen. I do shows to promote art and culture as well, and I've done lots of singing shows, etc., things like that. Recently, I've seen lots of singers on my show, and I keep doing that. So definitely, and Saloni Sanjeev Arora is one of them as well, and I had really enjoyed that show. So hop on my show, Salim Saab, someday, and let's have fun. Let's make that awareness in the people that who is Ustad Salim Khwaja. Still, not very many people know here in Canada. So let's get you on board. Thank you so much for hopping on the show. And Saloni Sanjeev Arora ji is saying thanks a lot for the suggestion. Helped out. Okay, Bilkul Janab. You can always reach out to your mentors, as Symah said, and friends. If you are indecisive of something and you have some fear about it, they can definitely better guide you. So thank you so much, Loniji, for your comments. Samreen Waris is a great artist. She's a great person. She's saying nobody knows about future. Absolutely, only Allah knows about the future. That's right. But we should be realistic, more than positive, and hopefully, yes, absolutely. We have to be positive. We have to think that, yes, we'll get success and things like that. And then, well, I agree with you, and nobody remove your fear. You have to remove it amongst reasons of fear. Exactly, you have to do it by yourself. Nobody else can. कि कोई ऐसे निकाल के आपके अंदर से और कोई फेंक देगा fear को, ऐसा बिल्कुल possible नहीं. You have to fight your fear. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल. वो सांप से डरते हैं तो सांप को हाथ लगाना पड़ेगा. तो जो मैंने लगा दिया eventually. सलीम साहब कह रहे हैं, सलीम भाई साहब कह रहे हैं, thanks sir, thank you so much. ना बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. चलें जनाब, वापस चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ. फियर के बारे में हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली. फेलियर की बात करते हैं. क्या फियर जो है इट क्रिएट्स फेलियर्स? इज फियर अ कॉज ऑफ फेलियर? Sometimes failure is the cause of fear, and sometimes fear is the cause of failures. That's so how it's I vice versa. It's vice versa. Okay. Exactly. Okay. आप इतना फेल हो चुके होते हैं कि फिर आप डरना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी आपको डर ही होता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, तो फिर आप कुछ करते ही नहीं है, you know. But either ways, I think being stuck at one place is never a good idea. चाहे वो फेलियर की वजह से आप रुक रहे हो या चाहे वो आप डर की वजह से रुक रहे हो. So you can't just stay stuck for the rest of your life in whatever situation you are. Right. So you have to overcome that. You have to. Awesome. That's good. So welcome to failures and fears. जी, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब. पूरी फैमिली. देखिए, मैं यही कह रहा था कि एक शो में अभी पिछले दिनों कि दिस इज अ फैमिली शो. द एंटायर फैमिली वॉचेस. शेखानी सलीम साहिबा जो हैं, ये वाइफ हैं हमारे उस्ताद सलीम ख्वाजा साहब की, और ये भी जो है वो शो को देखती हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाभी शो पर आने का. थैंक यू सो मच. और कह रही हैं कि माशाल्लाह नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव शो. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ये नाइस शो होता है आप लोगों की वजह से कि आप लोग ज्वाइन करते हैं इस शो पे, आते हैं, अपना वक्त लगाते हैं. और क्योंकि टाइम इज मनी. एग्जैक्टली,
तो आप you are giving me that money. एंड और जो हमारे मेहमानान ग्रामी हमारे पास आते हैं, हमारे शो पर तशरीफ लाते हैं, अनकंडीशनली अपना वक्त देते हैं, अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करते हैं. सो दिस शो बिकम्स नाइसर जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस एंड आवर गेस्ट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. जनाब वलीद भाई कह रहे हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन phobias and fears embedded in someone's subconscious mind since childhood? What are the methods one can use to overcome? It's on the side note, Walid Bhai, I have done a show on fears and phobias. अगर आप मेरी वॉल पे मेरी वीडियोस पे सर्च करेंगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट एंड इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव शो. सो उसको भी जरूर देखिए और सामा से हम अभी जवाब लेने की कोशिश करते हैं. जी सामा जी. Since I'm not an authority on this, but the best thing I can tell you about phobias right now is that you must seek professional help. आपको समझ में आ जाता है कि ये fear जो है ये कब phobia की shape ले रहा है. So you've got mental support available around you. So नहीं रुक जाए टाइम आउट. कैसे पता चलेगा मुझे कि ये fear phobia में कन्वर्ट हो गया? क्या सिम्टम्स होंगे? मेरे हाथ पैर हिलने लगेंगे या मैं आंखें बाहर आ जाएंगी? क्या होगा? Sometimes it becomes totally out of control और ये आपको ही पता चल रहा होता है. जैसे अगर मैं जानती हूँ ऐसे एक शख्स को जिनको ये फोबिया हो गया था कि मैं एलिवेटर में नहीं बैठ सकता, मैं एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकता. सो टू सम एक्सटेंट आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी वाइफ है मे बी, या जो भी आपके साथ हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ, आपको ये हिम्मत मिल रही है. बट अगर आपको ये लग रहा है कि कोई चीज आपके चाइल्डहुड से ही डेवलप हो रही है और कभी किसी ने उससे पहले नोटिस नहीं किया, माई सेल्फ बीइंग अ टीचर, तो हम लोगों को खुद से काउंसिल जरूर करते हैं स्टूडेंट्स को. बट देन अगेन हमें कभी कभी एंड usually then now we consult psychologists and we consult therapists who can help us identify that too. अगर वो चीज आपके बार-बार motivational talk से sort out नहीं हो रही, that means now it needs medical attention. So you must consult a therapist. ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब. थैंक यू सो मच. फरजाना शाह बहन हमारी आ गई हैं यूएस से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया. वासिफ आफरीदी भाई कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ माइंड स्ट्रेस? So many reasons. आज मैंने कढ़ाई नहीं खाई. तो I mean, there are too many reasons. और मैं आपको बताऊं अभी lately through social media, सबसे बड़ा reason ये है that we've started comparing our lives with others too much. हाँ, कोई अपनी मर्सिडीज की पिक्चर लगा रहा है, कोई अपनी बीमर की पिक्चर लगा रहा है, कोई अपने घर की पिक्चर लगा रहा है, कोई अपने ड्राइंग रूम की पिक्चर लगा रहा है. बड़ा ग्रैंड किस्म का ड्राइंग रूम है, मुझे भी चाहिए. किसी के ड्राइववे पे मर्सिडीज खड़ी हुई है, उसके आगे हाथ रख के उसके ऊपर खड़ा हुआ है, अपनी लैम्बोर्गिनी के पास बैठा हुआ है. आई वांट लैम्बोर्गिनी. तो ये बड़ा मसला है. एग्जैक्टली. कि एक वजह ये है that we've stopped being as grateful as we need to be. अल्हम्दुलिल्लाह. We've stopped believing in the law of abundance. Yes. हमें लगता है कि बस उसको मिल गया है तो अब मुझे नहीं मिल सकता, और उसका हम उसको देख रहे हैं. So we need to understand that there's so much out there. Allah subhanahu wa ta'ala has so much, वो सबको दे सकता है. He's like, बिल्कुल. he can give everyone. So आपका mind stress इससे भी बन जाता है. And in एक और चीज, it is such a fast-paced life now. Even मैं अपने लिए भी ये समझती हूँ कि हर वक्त I'm doing something. I was just telling my brother the other day, no matter what direction I am facing, I start working in that direction. मतलब I've got work in every side of myself, and I don't have to think. I just have to switch my role. इस वक्त kitchen में हूँ तो ये करना है, इस वक्त my son needs me तो ये करना है, इस वक्त मेरा काम है, इस वक्त मेरा client है, इस वक्त मेरा school है, so I've got so much. And what is missing in the life is the time where I can spend some me time. तो ये हमने छोड़ दिया है. And इसका मैं क्या करती हूँ, I especially wake up way before Fajr so that I can be with myself. And I need to do that. I mean, I'm not saying because मैं बहुत religious हूँ or something. ये मेरी ज़रूरत बन गई है. That keeps me healthy. That keeps me sane. So I need to take that time out for myself where there's quiet and peace around me. I'm enjoying a cup of tea, a coffee. I'm putting and jotting down. Just you are with yourself, your own self. और माइंड स्ट्रेस आप इससे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. आप चीजों को लिस्ट डाउन करना शुरू कर दें and start giving a tick to it and start giving a pat on your back as well. कि अगर आपने छोटी सी भी कोई अचीवमेंट की है तो let's celebrate. हम लोग इतना बड़ा गोल अचीव करने के
शौक में और उसके मतलब बहुत सारा हमने अचीव करना है कि छोटी छोटी खुशियां जो हैं उनको हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और हम बिल्कुल देख पा रहे हैं कि कोई अच्छा मतलब योर चाइल्ड इज देयर विद यू, योर किड्स आर देयर, योर मॉम्स देयर, योर फैमिली इज देयर, यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट एंड यू आर जस्ट वरीड अबाउट सोशल मीडिया का वो बंदा, आपका फ्रेंड जो किसी आपकी नजर में किसी और तरीके से आपसे आके बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और फरजाना शाह कह रही हैं कि आई वॉच लेटर इन डिटेल कॉज अगेन आई एम लेट बट विल वॉच द रिमेनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना बहन आपका शो पर रहने का। बिल्कुल, बाकी जो बच गया है वो आपका आप रिपीट करके देख लीजिएगा, इसको कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। और जनाब आसिफ भाई, आपके सवाल का जवाब साइमा ने दे दिया। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको जवाब पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वलीद भाई फिर कह रहे हैं कि आई हैव रिसेंटली रेड आर्टिकल वेयर अ पर्सन पोस्टेड दिस क्वेश्चन व्हिच किक स्टार्टेड डिस्कशन, सो वुड बी ग्रेट टू नो योर पर्सपेक्टिव। कौन सा सवाल है जनाब? तो ये बताएं कि या इससे पिछले वाले से कनेक्टेड है आपका कमेंट, तो थोड़ा सा जरा प्लीज बताइए। समरीन वारे साहबा कह रही हैं कि समटाइम्स फेल्योर, समटाइम्स सोसाइटी, sometimes some people who's around you, many reasons for fear, uh, sometimes losing someone। हाँ, हर तरह के, हर आदमी फियर देता है। बिल्कुल आप सही कह रही है। कभी फेल हो जाने का डर है हमें, कभी सोसाइटी का डर है कि लोग क्या कहेंगे, जैसे अभी वलीद भाई बात कर रहे थे। कभी लोगों से हम डरते हैं कि यार ये तो पता नहीं कोई पुलिस वालों से और ये जो इदारे के लोग होते हैं उनसे सब डरते हैं, उनसे डर लगता है, फियर होता है उनका, ठीक है ना। और कभी कभार जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जो सबसे, मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे डेंजरस फियर है वो यही है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं और आप उनसे डर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे रीजन, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लूजिंग समवन, एब्सोल्युटली बिगेस्ट फियर, एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली एग्री कि इस जैसा सॉरो, इस जैसा फियर कोई हो नहीं सकता कि आपके दिल में एक डर कि यार ये मैं कहीं किसी को लूज ना कर दूंगा। क्या कहेंगे आप साइमा के बारे में? मैं बिल्कुल ये बात पहले ऐड करना चाह रही थी, लाइक द इमोशनल फियर। आई एम ग्लैड शी ब्रॉट इट अप समरीन, बहुत शुक्रिया। ये इमोशनल फियर है कि मैं अकेले, इसमें भी दोनों पर्सपेक्टिव आ सकते हैं। एक कि मैं अकेली ना रह जाऊं या अकेला ना रह जाऊं फॉर दैट मैटर। तो आपके साथ जो भी है वो आपके लिए टॉक्सिक है या आपके लिए वैल्यूबल है, आप उसके साथ you're just clinging to that person just because you're afraid of being alone. And sometimes you so desperately want the other person to be in your life that you forget your own self. आप अपने आप को devalue कर रहे हैं, आप सिर्फ खुशी को देख रहे हैं and you're not thinking about yourself. So you need to have the me time. You need to know your own worth. And before you love and care for somebody else, you need to love and take care of your own self. Most importantly. Because मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास एक ग्लास में पानी है और अगर वो आपसे झटक कर गिर जाता है तो उस ग्लास में से पानी ही गिरेगा, क्योंकि उस ग्लास के अंदर पानी था। अगर उसके अंदर चाय होती, कॉफी होती, जूस होता तो वो गिरता। इसी तरह you need to fill yourself up with love and niceness and kindness so that people who interact with you will get love and kindness from you, or vice versa. वही वाइब्स आपके पास जो होता है वही तो देते हैं ना, वही आप देते हैं। And कभी-कभी I tell you, it works the other way as well. I'm sorry, I'll just add to it. कभी-कभी जो आपको चाहिए है, honestly, I've started doing that. आपको जो चाहिए, आप वो देना शुरू करते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है you want people to be nice to you and they're not being nice, you start being nice to others. Exactly. बिल्कुल. So it will definitely come back to you in ways that you cannot even imagine. That is true. That is true. Thank you so much, जनाब। राव दिलशाद इदरीस कह रहे हैं एग्जैक्टली राइट सर। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और फरजाना शाह कह रही हैं कि लोग क्या कहेंगे शायद सबसे बिग है। बिल्कुल सबसे ज्यादा वही सोसाइटी के लिए हम परेशान रहते हैं कि ये लोग पता नहीं क्या कह देंगे हमें, लोग क्या कहेंगे, मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो बिल्कुल ये और उसका इम्पैक्ट उन पे नहीं हो रहा होता, जो लोग कहेंगे उन पे नहीं हो रहा होता, बिल्कुल किस पे हो रहा होता है? खुद पर डेफिनेटली। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। वलीद भाई कह रहे हैं कि आई बिलीव कीपिंग फोटोज ऑफ गुड थिंग्स। क्या बात है जनाब। निहारी कोर में पाए, आई एम श्योर
materials you cherish and enjoy helps in keeping your mind frame to positive and success. बिल्कुल बिल्कुल, many successful people do that. It works. बिल्कुल बिल्कुल जनाब तस्वीर वो होता है ना कि जो expecting mothers होती हैं उनके कमरों में एक वो खूबसूरत से गोरे से नीली आंखों वाले बच्चे की पेंटिंग जो है ना वो या पिक्चर फोटो बड़ा सा फ्रेम वो बिल्कुल बेड के पांव की तरफ बिल्कुल सामने लगा हुआ होता है वो हर वक्त, यानी वो उसके जहन में बिठाया जाता है कि कोशिश करो कि बच्चा ऐसा हो जाए. No comments on this one. Also, मुझे ये जरूर पता है कि जो expecting mothers होती Really, हैं. isn't it? I mean, you must have seen this, Symah. You have been through this process. Seen that in old movies. I don't know Did, if अभी तक नहीं, hold on. Did you have that picture? Truthfully बताना है. Did you have that picture in your bedroom? No. I'll tell you what I had when I was expecting. So I always wanted, you know, I knew कि जब अभी you're expecting to have a baby, no matter आपने जो knowledge और जो environment उसको देनी है, you start, you know, affirmative sentences. वो बातें वो काम आप करना शुरू करते हैं. वो उसको vibes जाती हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So I remember having recited Quran like a lot. I stopped watching TV. You won't believe, and I don't know, a lot of people might think I'm कुछ ज़्यादा extreme की बात कर रही हूँ, but this is exactly what I did. I stopped listening to music. I stopped listening to a lot of TV, and I started reciting a lot. And because I wanted my son to be like this, so Alhamdulillah, so far he's on the track that I had imagined and I had prayed for him. So क्या बात है. Very good. Thank you so much. I already asked the question, she answered, so thank you so much. Thank you Walid bhai, thank you so much. और जी बिल्कुल ये हमने comment ले लिया था. Rao Dilshad Idris is saying I'm completely agreed with Madam Symah. समरीन भी कह रही हैं अच्छा उनसे एग्री कर रहे हैं. ठीक है जी, इन्होंने उनको रिस्पॉन्ड बैक किया. थैंक यू सो मच. और वो शुक्रिया भी अदा कर रही हैं आपका जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया. और फरजाना शाह कह रही हैं कि जी बिल्कुल अपने आप पे people don't care what's happening with you. Exactly. हाँ, और बड़े दांत वांत भी निकाले इन्होंने. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना. थैंक यू. अच्छा जी, तो फेसिंग फेलियर की बात हमने की और फियर्स की. कोई ऐसी चीज आपके जहन में हो साइमा जो आप कहना चाह रही थी इस शो पर और इस टॉपिक के हवाले से, वो आप नहीं कह पाई क्योंकि इसके बाद फिर हम एक और राउंड की तरफ हम चलेंगे. एक और इसका सेगमेंट है हमारे शो का which is not known to you. Just one thing that I'd like to say, Aijaz साहब, because मुझे लगता है कि like atoms, all individuals have charges in them. वो उन charges को मैं emotions समझती हूँ. वो negative भी होते हैं और positive भी होते हैं और mostly negative होते हैं. तो वो अगर मुझे लगता है अगर आपके अंदर वो negative energy भी है, so you should be grateful because there's some sort of energy inside you which you can transform and use it to your advantage. जैसे बहुत से लोगों को फेलियर के बाद अगर अग्रेशन आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, रिवेंज की बहुत फीलिंग आ जाती है, जेलसी की फीलिंग आ जाती है, तो आप इस सारी एनर्जी को सेव करें और यूटिलाइज करें, कन्वर्ट करें अपने बेनिफिट के लिए. और इस अग्रेशन को, इस स्ट्रेंथ को आप यूज कर लें अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए. तो आई थिंक it is self-improvement is the best revenge that you can take from any sort of situation, any kind of people around you. तो आप अपनी negativities को positives में convert करके resourceful बनिए. बिल्कुल ठीक. Thank you so much. फरजाना शाह कह रही हैं कि yes, mother's actions and learnings impact child. बिल्कुल. Yes, you're right, ma'am Symah. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेकंड करने का. और समरी नवारी साहबा कह रही हैं कि एक्चुअली इन्वायरमेंट वर्क्स इन प्रेग्नेंट वुमेन. इन्वायरमेंट बहुत काउंट करता है. बिल्कुल इन्वायरमेंट वर्क्स. तो समरीन आप भी बताएगा कि क्या आपने भी वो तस्वीर जो मैं कह रहा था अभी वो आपने लगाई थी क्या? तो जरा बताइएगा हमें ताकि पता चले कि कितनी उसकी मिथ क्या है, क्योंकि मैंने लगाई थी. तो इसलिए I'm telling you from my experience. तो समरीन वारिस फिर कह रही हैं कि by act, by behaving, by watching, etc. बिल्कुल And thinking, yeah. बिल्कुल, exactly.
एग्जैक्टली। चलिए जनाब, हमने काफी सैर-हासिल गुफ्तगू की इस टॉपिक पर, और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है यू एंड क्यू। ओके। उसके अंदर हम खेलते हैं एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे वर्ड्स कहूंगा, लफ्ज अल्फाज कहूंगा, और आपने उसका इंस्टेंटेनियसली जवाब देना है विदाउट थिंकिंग, वट एवर कम्स टू माइंड। नो पॉलिटिकल आंसर्स, कोई नहीं कि हाँ ये वो कोई, नो डबल आंसर्स, नथिंग। जो जहन में आ रहा है यू हैव टू स्पीक आउट, ठीक है? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी आपने फ्रेम का जवाब दिया, तो ये अब फ्रेम डिस्कस होने वाला है काफी शोज पर, मुझे लगता है। इस पे भी बल्कि एक शो हो सकता है, किसी साइकोलॉजिस्ट को लेकर के आता हूँ मैं, उसके साथ बैठ करके बातचीत करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि फ्रेम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। समरीन, आप आए शो के ऊपर और डिस्कस करें। आपने बहुत सारी चीजें बताई कि जी क्या क्या चीजें हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, और समरीन आर्टिस्ट हैं और बहुत जबरदस्त आर्ट वर्क करती हैं, और आजकल इन्होंने कुछ साथी मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, बट शी इज अ ग्रेट ग्रेट आर्टिस्ट। अच्छा जी, रेडी? Kind of, yes. काइंड ऑफ। घर, Sakoon. सुकून। चाय, Must. मस्त। हवा, Freshness. फ्रेशनेस। घोड़ा, My favorite animal. अच्छा क्या बात है। कभी सवारी की है आपने? Yes. कहाँ पे, Yes. मरी में? Mari mein, yeah. When my son used to go for his riding classes, हाँ Lawrence. बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, क्योंकि वो घुड़सवारी के लिए जो है ना मरी ही जाना पड़ता है, I और know. वहां पे सवारी कर सकते हैं, या कराची में कहीं कभी कभार बीच के ऊपर जो है वो समंदर के ऊपर जो है वो घुड़सवारी लोग करते हैं, मुझे नजर आते हैं, ज्यादातर कैमल्स होते हैं वहां पे। अच्छा जी, घोड़ा। पहाड़, माउंटेन। Peace again, I would say. I पीस, think peace. Pahar gives me freshness. फ्रेशनेस, पीस। ठीक है जी, बिरयानी। Anytime. बिरयानी एनी टाइम, ठीक है जी। फूल, Pyar. प्यार। चमचा। Not needed. अच्छा ठीक है, हाथ से काम चलाएंगे, हाथ से खा लेंगे। ठीक है। दोस्त। Dost जी, is important. Is a must have. मस्ट हैव, ठीक है। पड़ोसन। Okay, Parosan is. I mean, you can't help. You just have to have a Parosan, no? You can just pray. I just. Exactly. They can be like really, really important part of your lives. But me being a so busy person, I think so hardly any interactions. बिल्कुल बिल्कुल, Which ठीक isn't हो a very गया। problem, though. Yeah. मोहब्बत, पहले खुद से. पहले खुद से, ये बात, ये आपने सेकंड कर दिया अभी, जो आपने पहले कहा था ना कि यू हैव टू लव योरसेल्फ, आप अपने आप को, यानी आप अपने आप को टाइम दें। बिल्कुल बिल्कुल। उल्लू। Cute. क्यूट। जब कोई बन जाता है तो फिर बहुत ही क्यूट लगता है, क्या ख्याल है? चले ठीक है जी, बिल्कुल उल्लू क्यूट होता है, बिल्कुल ठीक है। आप बनाती हैं? I don't know. I think काफी सारे मिल ही जाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. Oh my goodness, oh my goodness. No, it's just we are hilarious, and we are trying to create some lightness in the show. So because all these fears and failures, all these topics are dry topics, हंसी खुशी में अगर हम कोई चीज लर्न कर लें, सीख जाएं, और हम उसको कन्वे कर सकें, there is nothing like that. So thank you so much for your understanding. और जनाब,
वलीद अहमद खान कह रहे हैं कि सर जी कॉकरोच की पॉलिटिकल एफिलिएशन जरूर पूछेगा जो इन्होंने वॉशरूम में एलिमिनेट कर दिया था। सही। पॉलिटिकल एफिलिएशन सही है, बिल्कुल ठीक है। तो वो तो बताएंगे नहीं ये, वरना इनका पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी की हैं खुद, तो इसलिए क्योंकि जाहिर है कि कॉकरोच भी अपोजिट पार्टी का ही होगा, जाहिर है अपनी पार्टी का कॉकरोच तो नहीं मार सकती आप। No, but I read somewhere आपने लिखा हुआ है कहीं पे that you do not discuss politics in your show, yeah? नहीं, I don't. We are not discussing politics at all. बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं। We are discussing political parties तो। Yeah. चलिए जनाब, सबरीन वारिस साहब कह रही हैं कि इंशाल्लाह आई विल कम। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इनबॉक्स कीजिए, मुझे बताइए कि कब आ सकती हैं। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते चलते आपका क्या मैसेज है साइमा फॉर द पीपल हु हैव फियर, द पीपल हु आर फाइटिंग देयर फेलियर्स, और हमारी यूथ के लिए स्पेशली क्या आपका मैसेज है, और हमारी जो वुमेन हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं एक बहुत जनरल मैसेज दूंगी, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर दैट यू आर फ्रॉम। जो भी आपकी सिचुएशन है, यू डू नॉट नीड टू फील पिटी and you do not need to gather sympathies from anyone. So you take hold of your life, no matter what the situation is. वो एक ज़ात है जिसने प्लान करके, जिसको पता है आप इस वक्त कहाँ हैं. So even if you have no one around you, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ क्रिएटर जिसने आपको बनाया है, और उसने इसलिए नहीं बनाया कि वो आपको बनाकर छोड़ दे. सो हैव फेथ इन दैट, द सुप्रीम पावर. सो आप अपने लिए अपना वे आउट ढूंढें. कभी कभी लोगों से आपको मिलती है वो स्ट्रेंथ, और कभी कभी अपने अंदर झांकने से. सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको अपने अंदर से मिलेंगे जब आप मेडिटेट करेंगे. सो टेक एडवांटेज, मेक यूज ऑफ दैट फोर्स इनसाइड यू, because there's not stronger force than that, and you can always get to a better place, no matter how dark or how deep the hole you think you are currently at. True. बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और वलीद भाई कह रहे हैं कि एजाज साहब, आई एम प्लानिंग टू विजिट टोरंटो सून, सो होपफुली विल मीट यू। सर, आई एम हेडिंग आउट टू पाकिस्तान सून इंशाल्लाह, तो आई एम नॉट श्योर व्हेन आर यू कमिंग। आई एम कमिंग बैक इन सितंबर, आई एम लीविंग नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, तो लेट्स सी व्हेन वी मीट। समरीन वारिस कह रही हैं कि वेरी नाइस शो, स्टे हैप्पी बोथ ऑफ यू as you are now. Thank you so much. बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हम लोग वाकई अच्छे मूड में हैं, हंसी खुशी जो है वक्त गुजर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपके लिए भी हम दोनों की तरफ से यही दुआएं आपके लिए भी, कि आप भी हमेशा खुश रहें, सदा खुश रहें। बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, शो को हम एंड करने का वक्त हमारा आ गया, और ड्रीम्स टेलीविजन की तरफ से, साइमा द एजाज कुरैशी शो की तरफ से, मेरी तरफ से, तमाम मेरे जो टीम मेंबर्स हैं जो इस शो को रन करने में मुझे हेल्प करते हैं, उन तमाम की तरफ से, जिन लोगों ने इस शो को लाइव वॉच किया, कमेंट किए, सवालात पूछे, अपनी एडवाइजेस दी, उन तमाम दोस्तों की तरफ से, या जो लोग अपने टाइम जोन के मुताबिक इस शो की रिकॉर्डिंग वॉच करेंगे, उन तमाम दोस्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। सो थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। Thank you so much to you, your team. I'm honored and humbled to be a part of this, and I'm grateful to all the audience who've been part of this show. Jazakallah khair, and I think you're doing a fabulous job. Keep up with that. Thank you so much. Take care. Bye-bye. जी व्यूअर्स, ये थी साइमा नज़ीर साहिबा, समरीन चढ़ गया दिमाग पे, साइमा नज़ीर साहिबा, और लाहौर से एजुकेशनिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। लर्निंग सेंटर इन्होंने खोला है, उसको ज़रूर आप देखिए जा करके कि वहाँ पर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, फियर्स और फेलियर्स को फाइट करने के हवाले से। इस शो को आप रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इससे आपको हासिल होंगी। हमारी कोशिश यही होती है कि इस शो का मकसद आपकी एम्पावरमेंट है, आप तक इंफॉर्मेशन, इन लोगों की जो लर्नड लोग हैं हमारे, उन लोगों की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। आइंदा शो में फिर हाजिर खिदमत होऊंगा अपने नए मेहमान के साथ। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।